population is. Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Dear friends, I hope all of you are fine. So today we are here at IBA. So आज चैम्बर ऑफ इस्लामिक कॉमर्स की तरफ से इवेंट है for the e-commerce platform who are going to perform as electric working like Daraz, eBay and Etsy, everything. So now we are here. So अभी हम अंदर जाते हैं एक्वेरियम के अंदर. आप हमारे साथ रहिए और इस इवेंट को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग इस चीज़ से कुछ हासिल करें और कुछ सीखें. सो लेट्स गो टू एक्वेरियम. सो वी आर हियर. अब इंटर हो गए. सो नाउ खामोशी छाई जाएगी. सो वी आर कीप फाइट. स्टेक होल्डर्स के साथ. फिर ठीक है, टेलीमार्ट ने थोड़ा टेक ऑफ किया. ऑनलाइन बड़ा नया था उस पर, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा हम्बल हमने स्टार्ट किया. और एक और चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो पहली बार मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ. जब हमने टेलीमार्ट लॉन्च किया था उसके पहले साल के अंदर ही हमने अपने रिटेल स्टोर्स भी लॉन्च किए, which were company owned, company operated outlets. And that again has a very important lesson for all of you guys. जिस साल हमने स्टार्ट किया उसकी ब्रांड तो कोई जानता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी. हमने वो स्टोर्स लॉन्च किए और आज उनमें से सारे स्टोर्स बंद हो चुके हैं सिवाय एक. सो दैट वाज द फर्स्ट फेलियर दैट हिट अस हार्ड एंड इट वाज अबाउट टाइम. हमने उस वक्त अपने स्टोर्स बनाए, वहाँ पे कंट्रोल बहुत मुश्किल था बनाना, अकाउंटेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो रही थी उन स्टोर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम तो स्टोर पर बैठ नहीं रहे थे. हम ई कॉमर्स को देख रहे थे, हम ऑफिस में थे, स्टोर पर कोई ऑनलाइन सोर्सेज थे. तो एक बहुत बड़ा फेलियर हमें नजर आ रहा है कि हमारी आउटलेट्स प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही थी, लॉस कर रही थी. मार्केट्स के अंदर होते हुए लॉस कर रही थी, मॉल्स के अंदर होते हुए लॉस कर रही थी. एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि यार फेलियर का जो इम्पोर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, फेल होना अपनी बात नहीं, बट इट्स बेटर इफ यू लर्न क्विक फ्रॉम योर फेलियर. तो आप अपने फेलियर्स को ड्रैग नहीं कर सकते. इफ यू लर्न क्विक फ्रॉम योर फेलियर्स दैट विल हेल्प यू इमेंसली गोइंग फॉरवर्ड. तो हमने कहा नहीं यार इसको बंद कर देते. एक स्टोर हमने ऑपरेशन रखा जो प्रॉफिट देता इन 2014. और फिर हमने बाद में we went on to establish a franchise program. So I'm here to share my journey today, and I'm here to inspire a lot of females in the room to become entrepreneurs. क्योंकि पाकिस्तान में female entrepreneurs are so inspiring. I think can we have a huge round of applause again for them. So I'm here to share my journey today, and I'm here to inspire a lot of females in the room to become entrepreneurs. क्योंकि पाकिस्तान में female entrepreneurs. The next is market diversification based on the usage of multiple overlapping e-commerce platforms. We have divided countries in 10 different regions. This basically helps to diversify your exports and destination, because while it is easier to onboard on one platform because it saves you from all the regulatory hiccups and resources. For example, if we talk about Latin America, then there is an e-commerce platform by the name of Mercado Libre that is being used over there. If we talk about Central Asia, then Ozon,
the Russian e-commerce platform that is being used. If we talk about Southeast Asia, then Lazada is being used over there. Then there's a local e-commerce platform. What does an entrepreneurial journey look like? It is not all, what we see, in the publications, a lot of publicity and, good stuff, but it's not. It's personally, I've had 2 businesses of my own. It's a very, very hard and lonely journey. So I believe more than anything, building social capital is most important to get you guys to consider at least opening a business or starting a business of your own एक दफ़ा. अगर आप फेल भी होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जब जॉब करेंगे you will become an entrepreneur in that job and believe me that will get you more success than anything else. So just a few things that I want to share about Best of Entrepreneurship. ये हमारा चौथा event है. We've done 3 sectors जिसमें हमने impact investment, fintech, microfinance हमने last किया था and today is e-commerce. And e-commerce, I'm so looking forward to hearing the stories of our panel today because e-commerce is something that you can do sitting out of your home.